यूनिट नंबर 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ये न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने। एग्जाम्पल नंबर 4, यूनिट नंबर 6, 1 to 8 सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल नंबर 1 and 6। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है फिजिक्स की और पेपर सर पे हैं, तो आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस, और अगर आप कर भी चुके हो तो ये क्वेश्चंस आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू करो। अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किए हुए तो फ़ौरन के फ़ौरन ये क्वेश्चंस करो। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप लोग कुछ समझना चाहते हो तो फिर डू राइट टू मी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम बढ़ाओ। चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम वीडियोज़ डालें। क्योंकि अभी ये जो वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए है, गौर से देखिएगा। तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना और इनकी तैयारी करनी है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है, आपने डायमेंशंस फाइंड करने हैं। मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, इनकी आपको डायमेंशंस फाइंड करनी आनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता, क्वेश्चन कोई आंसर नहीं पता कैसे अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको हेल्प आउट करूँगी। स्क्रीनशॉट्स ले ली जाइएगा इसका। फ़ोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, टॉर्क, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, इन सब के आपने डायमेंशंस लिखने हैं। शो दैट द गिवन फार्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट। ये सारे फार्मूलाज आपने प्रूव करने हैं कि ये सब फार्मूलाज डायमेंशनली करेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग v इज इक्वल टू एफ लेमडा की बात करते हैं तो आप इसको प्रूव करोगे कि देखो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड। तो आपने देखना है कि इसकी डायमेंशन मीटर्स पर सेकेंड ही आ रही हैं। मीटर्स पर सेकेंड का मतलब क्या होगा? मीटर लेंथ और सेकेंड टाइम लेंथ अपॉन टी, इसकी डायमेंशन बन रही है या नहीं बन रही है, आपने प्रूव करना है। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। What is moment of inertia? Also describe the moment of inertia of two particle system and drive expression. Define orbital velocity and give mathematical expression. State and explain Pascal's law. Define potential gradient. Show that electric intensity is equal to the negative of the potential gradient. State and explain Kirchhoff's current and voltage law. State and explain Archimedes' principle and law of flotation. Also define buoyancy, force or upthrust. Drive equation of continuity. Define electric flux. Give its mathematical expression and unit. Under what condition is the flux through a surface become zero and maximum. How resistance of a conductor is affected by vibration of temperature. By the increase of temperature, define temperature coefficient of resistance and drive its mathematical expression. Drive the expression for equivalent capacitance when three capacitors are connected in series or in parallel. What is diffraction of light? Differentiate between Fresnel and Fraunhofer's diffraction. What is interference of light? Describe its kinds and necessary conditions to observe the interference. डिटेल्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर को डिफाइन करना है। डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। शो दैट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a डॉट b प्लस c। ये सारे जो लॉज हैं ये आपने प्रूव करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव the area of a parallelogram. Describe the addition of two vectors a1 and a2 making an angle theta 1 and theta 2 with x-axis respectively by rectangular component method. Define projectile motion. A projectile is thrown in the air at an angle theta with a horizontal with a velocity v naught. Drive the equation for total time of flight, range and maximum height. Define elastic and inelastic collisions. Two non-rotating spheres of mass m1 and m2 initially moving with velocities u1 and u2 respectively in one dimension collide elastically. Drive expression for their final velocities v1 and v2. State and prove the law of conservation of energy in case of a freely falling body. Drive the expression for the absolute gravitational potential energy. Define centripetal force and centripetal acceleration. Drive an expression for the centripetal acceleration produced by the body of mass m moving along circular path of radius r. Define gravitational field and conservative field. Also prove that gravitational field is a conservative field. State Bernoulli's principle and drive Bernoulli's equation for steady, incompressible, non-viscous and irrotational flow of fluid. Then we have what is capacitor? Define capacitance and drive the expression for capacitance of a parallel plate capacitors with air between the plates. Number 2, a dielectric medium between the plates. Also prove that the ratio of both capacitance is equal to the dielectric constant ER.
How energy is stored in the capacitor? Drive an expression for energy stored in the capacitor. State Ohm's law. Describe Wheatstone bridge. Proof that for a balanced Wheatstone bridge, P upon Q is equal to R upon X. What is simple pendulum? Prove that the motion of a simple pendulum is simple harmonic. Derive the expression for its time period. Define simple harmonic motion. A particle is in the state of uniform circular motion. Show that its projection along one of the diameters executes simple harmonic motion. What are stationary waves? Discuss the vibration in the stress string and derive expression for frequencies when it vibrates in one loop, two loops, three loops, and n loops. Discuss the Newton's formula for speed of sound and the flaw in it. In what way did Laplace's correct the formula? Calculate the speed of sound in air at 0 degrees centigrade. What is Doppler's effect? Drive expression for the parent frequency of sound heard by the listener when the listener moves towards the stationary source, the listener moves away from the stationary source, the source moves towards the listener, yet the source moves away from the stationary listener. What are Newton's rings? Drive an expression for the radius of nth bright ring. What is diffraction grating and grating element? How is diffraction grating used to determine the wavelength of monochromatic light? Drive the relevant mathematical expression. Explain Young's double slit experiment. Give the result for position of bright and dark fringe. Also drive formula for fringe spacing. What is electric dipole? Drive the expression for electric intensity due to electric dipole at a point which is at a perpendicular distance y from the center of a dipole. न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं यूनिट नंबर 1 में न्यूमेरिकल नंबर 9 इसके अलावा एग्जांपल नंबर 1 यूनिट नंबर 2 1 2 3 5 6 example number 2 unit number 3 1 2 3 4 5 and 6 7 numericals example number 2 and 3 unit number 4 2 4 6 7 9 10 and example number 2 4 and 5 यूनिट नंबर 5 2 4 6 7 8 9 ये न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने एग्जांपल नंबर 4 यूनिट नंबर 6 1 to 8 सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल नंबर 1 एंड 6 यूनिट नंबर 7 में 2 3 5 8 9 एग्जांपल नंबर 4 यूनिट नंबर 8 में 2 4 9 एग्जांपल नंबर 1 2 and 4 यूनिट नंबर 9 numericals 1 2 5 6 7 example number 1 unit number 10 2 4 6 5 and 6 and example number 1 2 3 unit number 11 numericals 1 2 3 6 7 8 example number 1 unit number 12 4 5 8 and 10 example number 1 2 and 3 unit number 13 1 2 4 10 11 14 example number 13 so आप लोगों को इसमें कोई मसला है आप लोगों को इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो सॉल्व करने की. Do subscribe, like and share. Thank you.